Good morning, students. Students, today I am here with a new concept, and the concept is biotechnological applications in medicine. Students, as in our previous video, we studied that how biotechnology is very useful in the field of agriculture. In today's video, I will tell you that what are the benefits or what are the applications of biotechnology in the field of medicines. Students, as we know that in biotechnology, we are going to produce rDNA or recombinant DNA, and this recombinant DNA possesses a gene which is of our interest, and this gene participates in the process of transcription and forms one mRNA, and this mRNA finally goes into the ribosome, and it produces a kind of protein which is of our interest. So while we are using this rDNA technology in the field of the medicinal industry, here we can produce a lot of or a various kinds of therapeutic drugs which are more safe or more effective than the normal one. Okay, these recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological responses as in common case of similar products isolated from new non-human resources. I mean to say that while we are introducing this rDNA technology in the production of therapeutic drugs, these drugs which are produced by these biotechnology or rDNA technology are more effective than the normally produced drug, and those drugs which are isolated from different plants or different animals. Okay, now till now we have 30 such kind of recombinant therapeutic drugs are there in the world's market. And if I will talk about India, in India there are out of these 30 12 are marketed in India, यानी कि 30 आज तक थेराप्यूटिक ड्रग्स आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की गई हैं, एंड इनमें से जो 12 ड्रग्स हैं वो इंडिया में मार्केटिंग में के लिए अवेलेबल हैं. Now I am talking about the very first one drug, and this drug is insulin. So I will talk about the genetically engineered insulin. Students, uh, I want to tell you that the rDNA technology or the biotechnology has led to the sufficient availability of insulin for the management of the adult onset diabetes. As we know that if there is a diabetic patient, so definitely in the diabetic patient the sugar level will be increased, because due to the diabetic patient have low secretion of the insulin. So a number of patient is quite higher in the world or throughout the country who is suffering from diabetes. So while we are going for the biotechnological application, or while we are going for the rDNA technology, we can produce a huge amount of insulin through it, okay, which can protect the human life from the diabetes. Okay. Initially, I want to tell you that in the initial days, or while the drugs were used to control sugar level in the diabetic patient, this insulin was isolated or was produced inside the, or it was generally it was isolated from the slaughtered pigs and cattles, and then this insulin which was obtained from slaughtered cattle and pigs was injected into the patient's body, and this insulin was used to control the sugar level of that particular diabetic patient. But the insulin which was isolated from that particular slaughtered cattle or pig can cause allergy, okay, or it can develop different types of allergy or other kind of reactions, because these are foreign proteins, and our body has, as you know, that immune system, and it can identify the foreign proteins or foreign antibody antigens, and they can cause different types of allergies. So while it was used as a sugar controlling agent, the insulin which was isolated from cattle or pigs, okay, it was controlling, but it was causing, or it was developing different types of allergies too. But nowadays, due to the help of the biotechnology, we are able to produce the human insulin from the bacteria. Now how? I am telling you. As we know that insulin has two chains, means insulin is a kind of protein which has quaternary structure. Simply in 11th class we have studied that कि इंसुलिन जो है एक तरह का शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ टू चेन्स, चेन ए एंड चेन पी,
and these two chains, chain A and chain B, are interlinked with डाइसल्फाइड ब्रिजेस। मीन्स ये चेन ए और जो चेन बी जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं और इनको इंटरलिंकिंग होती है डाइसल्फाइड ब्रिजेस की हेल्प से। एंड वन मोर थिंग, लेकिन ह्यूमन बीइंग में जब इंसुलिन बनता है तो फुल्ली मैच्योर फॉर्म में नहीं बनता है, ठीक है। वाइल इंसुलिन इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंसुलिन इज गोइंग टू सिंथेसाइज्ड, इट्स अ प्रो हार्मोन। तो ये प्रो हार्मोन की फॉर्म में बनता है, यानी कि ये एक्टिव हार्मोन नहीं है, ये प्रो हार्मोन है, यानी इमेच्योर हार्मोन बनता है। इमेच्योर हार्मोन बनता है तो इसके पास क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। जब ये प्रो हार्मोन की फॉर्म में, यानी जब ह्यूमन में सिंथेसाइज हो रहा है इनिशियल स्टेज पे, जब इमेच्योर स्टेज पे है, इंस्टेड ऑफ टू चेन्स इट हैज़ थ्री चेन्स, ए चेन, बी चेन एंड सी चेन। बट दिस सी चेन disappears when this hormone becomes mature। लेकिन जैसे ही आपका इंसुलिन मैच्योर होता है, प्रो हार्मोन से एक नॉर्मल हार्मोन में, फंक्शनल हार्मोन में कन्वर्ट होता है, तो ये जो सी चेन है, ये सी जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच है, it is going to remove। Now this C chain, C peptide chain is not present in the mature insulin, and therefore the main challenge while we are going for the production, we were going for the production of this insulin, this human insulin inside the bacteria, the major challenge was that कि अब ह्यूमन में तो जब बन रहा था तो तीन चेनें थी, ठीक है। अब ये तीन चेनों में से हमें दो चेन चाहिए थी। नाउ द मेजर चैलेंज वाज दैट, ठीक है, ड्यू टू द और फॉर from using rDNA techniques, getting two different chains from two different bacteria, and then the main challenge was that how to assemble these two chains, ठीक है। But in 1983, the Eli Lilly, an American company, prepared two different DNA sequences corresponding to A chain and B chain of human insulin, and they introduced them into the plasmid of Escherichia coli to produce insulin chain। तो 1983 में एली लिली एक कंपनी हुआ करती थी यूएस की, अमेरिका की। उसने क्या किया, उसने दो सीक्वेंसेस ऐसे प्रिपेयर कर लिए, दो तैयार ऐसे सीक्वेंसेस तैयार कर लिए डीएनए के, या मैं कहूँ कि दो ऐसे जीन तैयार कर लिए जो साइमल्टेनियसली, एक जीन तो था ए चेन प्रोड्यूस करता था और दूसरा वाला जीन बी चेन को प्रोड्यूस करता था। देन व्हाट दे डिड, इन्होंने क्या किया, इन जीन्स को प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया। किसके, एस्केरिशिया कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, उस एस्केरिशिया कोलाई के प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया। अब प्लाज्मिड ने रेप्लिकेशन किया तो कॉपी नंबर बढ़ाया, और उस प्लाज्मिड ने जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेशन किया तो उसने एक बैक्टीरिया ने तो ए चेन बनाना स्टार्ट कर दिया और दूसरे बैक्टीरिया ने बी चेन बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दी चेन्स ए चेन एंड बी चेन वेर देन प्रोड्यूस सेपरेटली, यानी अलग अलग बैक्टीरिया में ए चेन और बी चेन को प्रोड्यूस कर लिया गया, ठीक है। एंड देन दे वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज बैक्टीरिया, और जो प्रोटीन यानी जो चेन बनी थी इनको एक्सट्रैक्ट किया, एंड दीज टू चेन्स वर कंबाइंड बाय क्रिएटिंग अ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, लाइक ह्यूमन इंसुलिन। और उन दोनों चेन्स को जोड़ दिया डाइसल्फाइड ब्रिजेस या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की मदद से, एंड एक सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इन्होंने क्या कर दिया, इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस कर दिया और इसको नाम दे दिया ह्यूमिलिन, HUMULIN। सो इन दिस वे द एली लिली कंपनी ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूज्ड टू डिफरेंट जीन्स to produce two different chains in two different bacterias. One bacteria produced A chain, the another produced B chain, and they isolated these proteins from these bacterias. They extracted them, then they combined them with the help of disulfide bonds and named them humulin, ठीक है, and used as insulin therapeutic drug। Is it clear? Now here in the picture you can see that, ठीक है, how the first one figure which is showing three different chains, ठीक है, A chain and B chain and C chain, and in the second one figure you are observing that A chain and B chain are linked with the bisulfide bond, while the C chain is free, means it is removed in the matured insulin। So in this way the biotechnology is used for the production of the insulin। So I hope so you understood today's concept. Still if you have any query, please concern. Once again I will meet you in the next video with some interesting facts. Till then, thank you, bye bye, and have a nice day.